we are going to discuss alkaloids in this lecture. So whatever the important points from alkaloids that will be discussed over here, not each and everything will be discussed, but whatever is important for GPAT Niper and other competitive exams, that will be discussed over here. You should able to differentiate between primary and secondary. So you should know what is meant by primary and secondary metabolites. So primary metabolites are nothing but the carbohydrate, proteins and lipids. So those are very important for energy and building blocks of the plant. Okay, so to synthesize the protein you require amino acid. So amino acid is also one of the primary metabolite. But what are the secondary metabolites? Apart from the primary metabolites, there are different metabolites in the plant. So those are known as secondary metabolites. Okay, so like alkaloids, glycosides, terpenes, volatile oil, sterol, glycosides, flavonoids, etc. So they have different function in the plant. Most of them will serve as a protective function in the plant. So these are the examples of few secondary metabolites that are not much important. Let's have a quick review. So alkaloids, there are different alkaloids: nicotine, choline, theobromine, your atropine, etc. They are found in plant. Okay, so these alkaloids are found in tobacco and coca. They will have a action on your nervous system. Then glycosides, cinegrine is found in a cabbage. Sulfur containing glycoside. And again monoterpenes, sesquiterpenes, terpenes will have different roles. Then again, basically in today's lecture we are going to start alkaloids. Okay, so in this lecture we will see the origin, history and some important points from the alkaloids. Again we will discuss what are the pharmacological actions of alkaloids on humans, what will be the effect of alkaloids on human. Then we will discuss some important point from chemistry of alkaloids. Then we will see the classification, which is very important as per as GPAT point of view, and chemistry is also important. Okay, then we will see little bit occurrence, drugs and their biosynthesis. Okay, so as far as biosynthetic pathway, we will take another lecture for biosynthetic pathway, don't worry. In this lecture we are going to see these points: origin, history and introduction of alkaloids. So what do we mean by alkaloids? Okay, basically what is definition of alkaloids? The term alkaloids means, see, alka means alkali, alloids means like. So these are the alkali like substances, means what? They will have a basic pH. Okay, so these are the secondary metabolites of the plant, which having heterocyclic, they are basic in nature, they having heterocyclic ring. Alkaloids is commonly used to designate the basic heterocyclic nitrogenous compound of plant origin, and that has a physiologically active. They are physiologically active and they will have at least one nitrogen in the structure. So if you want to define the alkaloids, you can define like that: alkaloids are the secondary metabolites of plant. They are basic in nature and they will have at least one nitrogen in the structure, and they are having physiological action. That's it. So okay, so that is the alkaloids. Alkaloids means alkali like, and commonly they are nothing but the secondary metabolites of plant having basic in nature. They are basic in nature, having heterocyclic ring and at least one nitrogen in heterocyclic, and they are physiologically active. Okay, so that's it. That is the definition of alkaloids. Now, who coined the term alkaloids? Okay, the term alkaloids, or it is also known as plains alkane, P silent, plains alkane. It was coined by a German pharmacist in 1819, that is known as a Messenger. So they might ask you the question. So plains alkane term was coined by, so it is a Messenger. So German pharmacist in 1890 was coined the term plains alkane, and that is nothing but the alkaloids. Okay, the mankind has been using alkaloids for various purposes from ancient time, for like poisoning to the animals, then medicine, then poultries, teas, etc. So in the ancient era, our ancestor was used to do hunting in the forest, and for that purpose they were using arrow poison, south arrowroot poison. Okay, that is nothing but that has a one paralyzing alkaloid in the that south arrow poison. साउथ एरो का जो रूट होता है, उसका जो रूट है उसमें पैरालाइजिंग, जो मसल पैरालाइजिंग अल्कोलॉइड होता है उसमें, तो वो पैरालाइजिंग अल्कोलॉइड उसको एरो में लगाते थे और वो हंटिंग करते थे. जैसे वो एरो किसी में लग गया, किसी जानवर में, तो वो जानवर इमीडिएटली पैरालाइज होता था, फिर जाके कैच करते थे. तो मतलब मैनकाइंड हैज बीन यूजिंग अल्कोलॉइड्स फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक पॉइजनिंग, देन मेडिसिन, पोल्ट्रीज, टीज, एक्सेट्रा. Then a French chemist known as Dorson in 1803 isolated first time alkaloid known as a narcotic.
Okay, he was isolated in narcotin. This was a little bit history of alkaloids. Now we'll see what are the effects of alkaloid on humans. What are the pharmacological actions of alkaloid? So alkaloids will have different or varying number of pharmacological actions. So we are not going to discuss all that, but just for introduction purpose, you should know activities of alkaloids on humans. Okay, so they will have a high biological activity. They will produce a varying degree of physiological and psychological responses. For example, if you take example of Raoul Pia alkaloids, serpentine and reserpine, okay, so these will interfere with neurotransmitter. They will act as antipsychotics. Then again, few alkaloids will interfere with the membrane transport. Some alkaloids will interfere with the protein synthesis and act as a anti-inflammatory. For example, colchicum. So in case of arthritis, rheumatoid arthritis, colchicum is used. Okay, in case of gout, colchicum is used. So in case of large doses, they are highly toxic in nature. For example, strychnine. Strychnine is isolated from Nux vomica and it is very toxic in nature. And that's why these alkaloids, they serve as a protective function in the plants. And again, these alkaloids have another important function like nitrogen storage of plant. They will serve as a nitrogen resource in the plant. So source of nitrogen will be there. That alkaloids will be source of nitrogen for the plants, right? So in small doses, they will have therapeutic value. In small doses, they will have a therapeutic value. So there are a lot of alkaloids which are used currently also in the medicine. For example, atropine. Atropine is currently used. Okay, so atropine is a parasympatholytic drug. It is anti-muscarinic drug. So it is also used. And various muscle relaxants are also used. Then tranquilizer, painkillers, mind altering drugs or chemotherapy agent. They are used in various purposes. There are a lot of pharmacological actions of alkaloid. There are varying number of applications of alkaloids in our biological system or our therapeutic system. There are few examples of psychoactive alkaloids here. Small compound but gets focus. They are the psychoactive compounds or psychoactive alkaloids. They are very small compounds but they get more focus. They will affect our central nervous system often by influencing the neurotransmitter. Means either they will increase the production of neurotransmitter, or they will decrease the production of neurotransmitter, or they will increase the metabolism or decrease the metabolism, like that. So all these part is a mechanism of pharmacological action. That is the different part. Okay. So what are the psychoactive alkaloids? So psychoactive compounds may be either stimulant or they may be either hallucinogens, they may be either depressant. Okay, so which are the alkaloid? They will act as a stimulant like caffeine, cocaine and ephedrine. Caffeine तो आपके टी में होता है, ठीक है. So वो alkaloid भी it will act as a stimulant. Cocaine भी stimulant है, ephedrine भी stimulant है. Cocaine इसमें जो है, cocaine is a habit forming. So ephedrine जो है, ephedrine it will have tachyphylaxis. ये हमने first lecture में पढ़ा था, I think pharmacology के. So tachyphylaxis means rapid tolerance, peak tolerance. So this ephedrine has a quick tolerance. Again, hallucinogen, top 10 alkaloids like ergot, then lysergic acid derivative. So these are hallucinogens, means they will stimulate your brain to a such an extent that you will lose all the controls. आप पगले जैसे behave करोगे, ठीक है. Again, depressant, morphine, codeine, heroin, they are the CNS depressant. They will have a depressant action, and they are the potent analgesic, ठीक है. Painkiller, they are the potent painkiller. They are known as central painkillers. They may also be narcotic, like addictive. Okay, they are having addictive tendency. If you take regular morphine 1 or 2 times, then you will be addicted to more. What is the biosynthesis of alkaloid? That is the most important part. So most of the alkaloids are synthesized from common amino acids. Okay, so what are those? Like tyrosine, tryptophan, ornithine, arginine, aspartic acid, lysine. They are the precursor for the most of the alkaloids. Okay, so most of the alkaloids, they are biosynthesized from amino acid. Remember, and now these are very important points for Niper exams. Okay, so for example, nicotinic acid precursor for the nicotine. So nicotinic acid is a vitamin. Okay, so nicotinamide, that is a precursor for nicotine. Then purine, precursor for caffeine. Purine, there along with the amino acid, most of the alkaloids are synthesized from amino acid. They are biosynthesized from amino acid, but this is not. There are certain exceptions. For example, nicotine, so it is synthesized from nicotinic acid. That is a vitamin. Then caffeine is synthesized from purine. Purine is a
base. It is a nitrogenous base. So purine is found in the DNA RNA structure. Okay, it is a purine base. So there are few alkaloids which are not synthesized from amino acids. So they are synthesized from other compounds like nicotinic acid. Nicotine is synthesized from nicotinic acid. So nicotinic acid is a vitamin. Okay, then caffeine is synthesized from purine. Purine is nothing but the nitrogenous base. Okay, terpenes along with the terpenes, they are biosynthesized along with the myevalonic acid pathway and some general, okay, and some other pathways. So we will see now those alkaloids which are biosynthesized from amino acids. So for example, these kind of alkaloids like pyroridine type of alkaloid, narcotin, or then propane alkaloids, they are biosynthesized from ornithine amino acid. And this was question in Niper. I think at least 3 times there was a question. So propane alkaloids are synthesized from ornithine. So pyrrolidine alkaloids. So those alkaloids containing pyrrolidine ring, example narcotin, and propane alkaloids, for example atropine, isoamine, and cocaine. So all these alkaloids are biosynthesized from this ornithine amino acid, right? So ornithine amino acid is a precursor or bioprecursor for propane kind of alkaloids. Remember, this was question at least 3-4 times asked in the Niper exam. It was also asked in GPAT. Lysine. So lysine is a biosynthetic precursor for piperidine and pyridine type of alkaloids. For example, conine, lobeline, arecoline, phenazolene alkaloids like lupulin. So all these type of alkaloids, they will be biosynthesized from lysine amino acid, right? Again, next one is a tyrosine. So tyrosine is a amino acid which is a precursor for synthesis of isoquinoline type of alkaloids. Okay, so tyrosine. So morphine alkaloids, morphine, codeine, thebaine, then imetine, cephalin, berberine, D-tuberculin, so curare alkaloids. All these amino alkaloids like colchicine, ephedrine. Okay, so these alkaloids are biosynthesized from tyrosine amino acid. Remember, isoquinoline type of alkaloids, amino alkaloids, they are synthesized from tyrosine amino acid. This is very important. यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एक टाइप पे क्या देंगे आपको, एक कॉलम बोलेंगे मैच द फॉलोइंग. एक कॉलम में देंगे आपको अमीनो एसिड एंड दूसरे कॉलम में देंगे अल्कोलाइड्स एंड दे विल आस्क यू मैच द अमीनो एसिड्स. एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे. You have to remember, tyrosine is a biosynthetic precursor for isoquinoline alkaloids like your morphine, codeine, thebaine, cephalin, berberine, and also amino alkaloids like colchicine. Then next one is so tryptophan. As you know, there is a indole ring in the tryptophan. So whatever indole alkaloids are there, they are biosynthesized from tryptophan amino acid. मतलब आप यहाँ पे लॉजिक भी लगा सकते. ट्रिप्टोफान में क्या होता है, इंडोल रिंग होता है. ठीक है, तो इंडोल रिंग होने के कारण वो क्या करेगा, इंडोल अल्कोलाइड्स बायोसिंथेसिस के लिए हेल्प करेगा ऑब्वियसली. सो ट्रिप्टोफैन विल बी द बायो प्रिकर्सर फॉर इंडोल अल्कोलाइड्स. सो इंडोल अल्कोलाइड्स अर्गोट अल्कोलाइड्स, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, रिजरपेन, स्टिक्निन, then अगर phytostigmine, berberine, and again quinoline alkaloids also, colchicine, then pinene, pinidine, camptothecin. All these kind of alkaloids will be biosynthesized from this amino acid known as a tryptophan. Okay, so you just have to remember this. अगर आपको क्लास भी याद रहा अल्कोलाइड का तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से बायोसिंथेसाइज होता है. देखो आइसोक्विनोलिन अल्कोलाइड्स, इसमें क्या होता है, मॉर्फिन, कोडीन, थीमिन, दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन. पिपरिडीन टाइप ऑफ, दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम लाइसिन. प्रोपेन अल्कोलाइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम ऑर्निथिन अमीनो एसिड. नेक्स्ट वन इज हिस्टिडीन. ओके, सो हिस्टिडीन में क्या होता है, इमिडाजोल रिंग होता है. So imidazole type of alkaloid like pilocarpine and all that, they will be biosynthesized from histidine amino acid, right? Then again phenylalanine. So amino alkaloid like ephedrine. Ephedrine कहाँ से biosynthesized होता है, phenylalanine से. So phenylalanine will be a bioprecursor for ephedrine amino acid. So these are very important. See, these are very important. So you have to remember the bioprecursor for amino acid. At least whatever is important. यहाँ पे सब कुछ नहीं बोला है, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है उतना बोला है कि ऑर्निथिन अमीनो एसिड किसके लिए है, पायरिडीन के लिए, प्रोपेन के लिए, कि ट्रिप्टोफैन किसके लिए है, इंडोल अल्कोलाइड्स के लिए, ठीक है, क्विनोलिन अल्कोलाइड्स के, हिस्टिडीन किसके लिए, इमिडाजोल के लिए, फिनाइलएलानिन किसके लिए, अमीनो अल्कोलाइड्स के लिए. Now how they are biosynthesized in the plants. Okay, so you know that plants, they will utilize your carbon dioxide and water and they will produce a sugar. Okay, so that is known as a photosynthesis. Carbon dioxide, water,
they will be utilized along with your light. Plant will synthesize sugar. Okay, now sugars will serve as an intermediate for the synthesis of various kind of secondary metabolites. Now sugars are in the various metabolic process, they will be converted into, अगर you डायरेक्टली शुगर से भी आपको ग्लाइकोसाइड मिलता है, ग्लाइकोसाइड में दो पार्ट होता है ना, एक शुगर पार्ट नॉन शुगर पार्ट, ठीक है, तो शुगर ग्लाइकोसाइड बनने के लिए यूटिलाइज होता है, और वही शुगर आपको डिफरेंट ग्लाइकोसाइड बनने के लिए, जैसे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, ग्लूकोज, ये सब, उसके बाद वो शुगर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जैसे रेस्पिरेशन में मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसका, किसका, प्लांट्स का, तो उसमें क्या होगा, वो शुगर का कन्वर्जन होगा एसिटिल कोए और अमीनो एसिड। वो अमीनो एसिड कहाँ से बनेगा, केमिक एसिड पाथवे होता है, ठीक है, sugar should be converted into amino acid by ischemic acid pathway, then sugar will be converted into acetyl CoA by malonic acid pathway, right? Once आपको अमीनो एसिड मिल गया प्लांट में, तो अमीनो एसिड से डिफरेंट कंपाउंड्स बन सकते हैं, कौन से, प्रोटीन बन सकता है, उसमें क्या बन सकता है, अल्कोलाइड बन सकता है, उसमें फिनॉल बन सकता है, फिनॉल से लिग्निन बन सकता है, ठीक है, ये एक्चुअली वी विल सी इट अगेन इन अनदर लेक्चर, बायोसिंथेटिक पाथवे, ये जस्ट ओवरव्यू है, सो इट इज जस्ट ओवरव्यू, secondary metabolites are synthesized in the plant. So malonic acid pathway से आपको terpenoids, steroids मिलेंगे, fatty acids मिलेंगे, और fatty acid के बाद में उसका flavonoids मिलेंगे, tannins मिलेंगे, ठीक है, it is just overview. Now see what is the classification of alkaloids. So alkaloids are classified into, there are mainly 4 classes of alkaloids. So alkaloids are classified into 4 classes. So true alkaloids, proto-alkaloids, pseudo-alkaloids, and false alkaloids. Okay. So what do you mean by true alkaloids? So what do you mean by true alkaloids? So true alkaloids, they are derived from amino acids. So they are derived from amino acids. They will have nitrogen in heterocyclic ring. Okay. So that is the true alkaloids. It is very important. ये इसके ऊपर नाइपर में क्वेश्चन आता है, जीपैट में क्वेश्चन आता है. So true alkaloids क्या होते हैं कि वो सिंथेसाइज होते हैं अमीनो एसिड से, और उसके हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन होता है, ठीक है. So true alkaloids are nothing but they are derived from amino acids and they will have a heterocyclic nitrogen in the heterocyclic ring. For example, atropine. Then pseudo-alkaloids, so they are also known as the alkaloidal amines. Remember, proto-alkaloids, they are also known as the alkaloidal amines, and they are also biosynthesized from amino acids, and they will not have a nitrogen in their heterocyclic ring. Remember, so proto-alkaloids or alkaloidal amines, they are synthesized from amino acid, but they will not have a nitrogen in the heterocyclic ring. Remember. For example, ephedrine is a amino alkaloid or alkaloidal amine, or it is proto-alkaloid. Then what is pseudo-alkaloids? So these kind of alkaloids are also biosynthesized or derived from amino acids, but they have nitrogen in the heterocyclic ring. For example, caffeine. Proto-alkaloids, they are not biosynthesized from amino acid. They are biosynthesized from different कंपाउंड्स, लाइक ये कैफीन जो है, कैफीन ने, इट इज अ स्यूडो अल्कोलाइड्स, ये अल्कोलाइड है, लेकिन बायोसिंथेसाइज कहाँ से हो रहा है, अल्कोलाइड से नहीं हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, फिर दूसरे दूसरा कंपाउंड कौन है, तो कैफीन इज अ बायोसिंथेसाइज फ्रॉम प्यूरिन बेस. ओके, तो प्यूरिन बेस जो है आपका, प्यूरिन पिरिमिडिन जो बेसिस है, नाइट्रोजन बेसिस, तो वहां से अगर अल्कोलाइड बनता है उसको बोलते हैं स्यूडो अल्कोलाइड्स. ट्रू अल्कोलाइड, प्रोटो अल्कोलाइड, दे आर बायोसिंथेसाइज फ्रॉम अमीनो एसिड्स. Then pseudo-alkaloids are not biosynthesized from amino acids. So what is the example of pseudo-alkaloid? Caffeine. Next one is a false alkaloid. They are a non-alkaloid. They are a non-alkaloid compounds. ठीक है, false alkaloid ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अल्कोलाइड नहीं होते, फिर भी वो अल्कोलाइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो होता है आपका, वो पॉजिटिव दिखे, वो पॉजिटिव है, मतलब false alkaloids are non-alkaloid. They will give you false positive reaction with alkaloidal reagent. As you can see, here is some basic structure of alkaloids. It is a structure of atropine. It is a structure of atropine. It is a structure of ephedrine. It is a structure of caffeine. It is also biosynthesized from amino acid. See, ये phenylalanine amino acid होगा यहाँ पे, या फिर tyrosine amino acid होगा, इससे यहाँ बायोसिंथेसिस होगा. अभी ये जो है, इसमें भी ये देखो, इसमें भी जो अमीनो एसिड है दिख रहा है आपको, और लेकिन इसमें अमीनो एसिड नहीं दिख रहा है, क्योंकि it is a pseudo alkaloids. Okay, they are not derived from amino acid, and they are not derived from amino acid, but they will have a nitrogen in the structure. See, यहाँ पे जो कैफीन का स्ट्रक्चर है, ये कैफीन का स्ट्रक्चर कहाँ से बायोसिंथेसिस होता है, प्यूरिन अल्कोलाइड्स, प्यूरिन बेस है, तो यहाँ पे प्यूरिन बेस है, लेकिन यहाँ पे अमीनो एसिड्स नहीं है,
Pseudo alkaloids are not synthesized from amino acid, remember. ठीक है. So true alkaloids, they are synthesized from amino acid and they will have nitrogen in heterocyclic ring. Proto alkaloids, they are known as amino alkaloids or alkaloidal amines. Okay, they are also biosynthesized from amino acid and they will not have nitrogen in the heterocyclic ring. ये पैटर्न ठीक है. यहाँ पे नाइट्रोजन है लेकिन हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नहीं है. देखो ये एट्रोपिन है, हेटेरो अल्कोलाइड, यहाँ पे नाइट्रोजन है. सो pseudo alkaloids, they are not synthesized from amino acids. Now false alkaloid, they are not alkaloidal compound but they will give you false identification test of alkaloids, right? तो ये इंपॉर्टेंट है. इसमें काफी एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है जीपीएट में भी, नाइपर में तो हमेशा आता है इसका. देन व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ अल्कलॉइड, कि अल्कलॉइड कौन से फॉर्म में रहेंगे. सो व्हाट आर द फिजिकल फॉर्म्स ऑफ अल्कलॉइड. Okay, so alkaloids may be occurs in the form of three bases. They may occur in the form of salt of organic acid, for example oxalic acid and acetic acid. So alkaloids, they occurs in the basically three forms: as a salt of organic acid, as a salt of inorganic acid, as a salt of special acid. Alkaloids occurs as a salt of organic acid, for example oxalic acid, acetic acid. For example जो भी अल्कोलाइड है उसका सॉल्ट होगा ऑर्गेनिक एसिड से, लाइक ऑक्सैलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड. अल्कोलाइड्स में ऑकर एज अ सॉल्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड लाइक मॉर्फिन सल्फेट, इपिडिन हाइड्रोक्लोराइड एक्सेट्रा. सो एग्जांपल इज ClH2. अगेन दे मे ऑकर एज अ salt of special acids in the plant, for example macoic acid. So opium alkaloids are present in the form of salt of macoic acid. So opium alkaloids, they are present in the plant in the form of salt of macoic acid. Quinic acid, quinine, cinchona-alkaloids, for example quinine, cinchonine, they are found in the plant in the form of quinic acid. Again ergot alkaloids they are found in the plant in the form of lysergic acid derivative. So there are special type of acids over there. ठीक है, ये याद रखो. पॉइंट 4, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक बार क्वेश्चन पूछा था ओपियम के बारे में. सो ओपियम अल्कोलाइड्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट ऑफ मेकोइक एसिड. नाइपर में पूछा था. अल्कोलाइड जो है वो तीन तरह के फॉर्म में होते हैं. एक तो ऑर्गेनिक एसिड के सॉल्ट में होंगे, या फिर इनऑर्गेनिक एसिड के सॉल्ट में होंगे, या फिर स्पेशल एसिड के सॉल्ट में होंगे प्लांट में. तो ऑर्गेनिक कौन से ऑक्सैलिक एसिड के फॉर्म में होंगे, या फिर एसिटिक एसिड के सॉल्ट में, या फिर इनऑर्गेनिक में. ये प्लांट में नहीं होता इनऑर्गेनिक में, लेकिन ये जब सिंथेसाइज कर रहे तब होता है. ये प्लांट में स्पेशल एसिड में भी होता है. सो दे मे बी ऑकर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोसाइड आल्सो. कुछ अल्कोलाइड्स ग्लाइकोसाइड के कॉम्बिनेशन में भी होते हैं प्लांट में, लाइक सोलेनिन इन सोलेनम निग्रम. सो फंक्शंस एंड ऑकरेंस ऑफ अल्कोलाइड्स इन द प्लांट. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अल्कोलाइड्स इन द प्लांट. सो दे आर हैविंग प्रोटेक्टिव फंक्शन. सो दे विल प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट द इंसेक्ट एंड herbivores ड्यू टू देयर bitterness and poisonous nature or toxicity. Then again, they are the final product of detoxification. They are the waste product. They are the final product of detoxification, or they are the final product of metabolism. Then they will serve as a source of energy in case of deficiency of carbon dioxide. So they will act as a source of nitrogen in case of nitrogen deficiency. They are, and in few instances they will act as a growth regulator in certain metabolic systems. Okay, so this is nothing but the functions of plant. Now distribution of these alkaloids in the plant. Some alkaloids are distributed in the various parts of plants. Okay, so for example some alkaloids are found in the all part of the plant. For example datura. So datura, if you take a datura, all alkaloids are found in all part. Means datura का जो plant है उसमें leaves में भी alkaloids है, उसमें stems में भी है, उसमें roots में भी है. There are certain alkaloids, they are found in only bark only. For example सिंकोना अल्कोलाइड्स जो होता है, जैसे सिंकोनिन, क्विनिन, क्विनिडीन, सिंकोनिडीन. तो दे आर फाउंड इन द बार्क ओनली. जो आपका साल होता है, आउटर कवरिंग ऑफ स्टीम, दैट इज अ बार्क. ठीक है, कुछ अल्कोलाइड्स बार्क में होते हुए, सिर्फ बार्क में होते हैं. सो देयर आर फ्यू अल्कोलाइड्स व्हिच आर ओनली फाउंड इन द सीड्स. फॉर एग्जांपल नक्सोमिन, स्टिचनिन, ब्रोसिन, दे आर फाउंड इन द सीड्स. सम अल्कोलाइड्स आर फाउंड इन द रूट्स ओनली. फॉर एग्जांपल एकोनाइट, then Withania somnifera. Some alkaloids are found in the fruits, black pepper. Then some alkaloids are found in the leaves, for example tobacco leaf, then Wasaka leaf. There are a lot of vinca alkaloids also. Tobacco, vinca, then so they are found in the leaves. Some alkaloids are found in the latex, for example opium. Opium alkaloids are nothing but they are not found in the leaves or stem or roots. Actually they are the product of latex. जब आप ओपियम को जो उसका जो कैप्सूल होता है उसको जो
कट करोगे उसमें जो उसमें से जो लेटेक्स बाहर आएगा उसमें ओपियम होता है आपका, ठीक है। सो देयर आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, they are distributed in the various part of plant. In nomenclature there are different type of nomenclature. Trivial names are there, okay. Trivial names, they will trivial names उसमें क्या होगा, आय नहीं लगेगा लास्ट में, ओके। सो फॉर एग्जांपल atropine, solanidine. So atropine from atropine species like cocaine from erythroxylon coca. So there are, the nomenclature is not much important for GPAT, but still you must know. कॉमन नेम्स भी होते हैं, जैसे आर्गोटामाइन, आर्गोट से आर्गोटामाइन, ये आर्गोट प्लांट से आता है इसलिए उसको आर्गोटामाइन बोलते हैं। जिसने अगर किसी ने कोई अल्कोलाइड का डिस्कवरी किया है तो उसके नाम पे उसका अल्कोलाइड, लाइक फेलेंट्रिन, फेलेंट्रिन इज अल्कोलाइड दैट वाज आइसोलेटेड बाय पेलेटर, साइंटिस्ट था उसने अल्कोलाइड आइसोलेट किया तो उसको बोलते हैं फेलेंट्रिन। मतलब अल्कोलाइड का एक तो उसका सोर्स क्या है उसके ऊपर भी नाम दिया जाता है, या फिर स्पीसीज क्या है उसका उसके ऊपर भी नाम दिया जाता है, या फिर कॉमनली ट्रिवियल नेम से डायरेक्टली आया नहीं लगा तो उसके ऊपर, जैसे एट्रोपस है आइसोलेट किया था एट्रोपस जीनस से उसको बोलेंगे एट्रोपिन। जैसे इधर तो जाइलम कोका, ये प्लांट से स्पीसीज आइसोलेट किया उसको बोलेंगे कोकेन। कॉमन नेम लाइक आर्गोटामाइन, आर्गोट से आइसोलेट किया उसको आर्गोटामाइन से, इसने साइंटिस्ट ने फेलेंट्रिन आइसोलेट किया उसको बोलेंगे फेलेंट्रिन। पेलेटर ने डिस्कवर किया था फेलेंट्रिन नाम का अल्कोलाइड। या फिर कुछ फिजियोलॉजिकल एक्शन होंगे अल्कोलाइड के, उसके बेसिस पे उसको नाम दिया जाता है, जैसे इमेटिन, इमेटिन will have emetic action, so that's why it is known as emetin. Like morphine, they act as a narcotic. So predominantly physical character, जैसे कोई किसी का physical character है हाइग्रीन, हाइग्रीन नाम का अमीनो एसिड है, it is very hygroscopic, हाइग्रीन नाम का अल्कोलाइड, it is very hygroscopic, that's why it is known as हाइग्रीन। कि मतलब नॉमेनक्लेचर को ट्रिवियल नेम भी दे सकते हैं आप, जैसे अल्कोलाइड के लास्ट में आय नहीं लगा दो, या फिर किसी अल्कोलाइड का नाम उसके जीनस पे भी होता है, जैसे एट्रोपिन एट्रोपस से आता है, तो जैसे कोई अल्कोलाइड का नाम उसके स्पेसिस पे होता है जैसे इरिथ्रोजाइलम कोका, या फिर कोई कॉमन नेम है आर्गोटामाइन फ्रॉम आर्गोट प्लांट, तो दैट इज अ नॉमेनक्लेचर, इट इज नॉट मच इंपोर्टेंट। प्रीफिक्स एंड सफिक्स इट इज आल्सो नॉट इंपोर्टेंट बट स्टिल, सो वी विल डिस्कस। अगर आपको अल्कोलाइड में नॉर आता है, नॉर इपिड्रीन या फिर नॉर एडेनालिन, नॉर मीन्स व्हाट, नॉर मीन्स एन मिथाइलेशन, एन डीमिथाइलेशन और एन डीमेथॉक्सिलेशन, नॉर सुडोइपिड्रीन, नॉर नार्कोटिक। नॉर मतलब क्या, नॉर जब भी आएगा अल्कोलाइड में तो एन डीमिथाइलेशन, मतलब इपिड या भी देखो या नॉर सुडोइपिड्रीन, तो इसमें नॉर हटा दो सुडोइपिड्रीन रहेगा, सुडोइपिड्रीन में क्या होगा एन मिथाइलेशन होगा, लेकिन नॉर सुडोइपिड्रीन में नहीं होगा। अपो मीन्स व्हाट, अपो मीन्स डिहाइड्रेशन, तो अगर डिहाइड्रेशन होके जो मिलता है उसको बोलेंगे अपो। अगर मॉर्फिन का डिहाइड्रेशन करके एक अल्कोलाइड मिलता है उसको बोलते हैं अपोमॉर्फिन। ये सिर्फ सफिक्स एंड प्रीफिक्स होते हैं उसके। सो DINE, अगर आइसोमर होगा किसी अल्कोलाइड्स का तो उसको डिनोट करेंगे DINE से, लाइक क्विनिन, क्विनिडिन, क्विनिडिन, क्विनिन, क्विनिडिन, या ININE indicate the case of alkaloids lower the pharmacology, like argotamine, argotaminin, ठीक है, वही ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट कौन सा, ये चार्ट, ठीक है। सो व्हाट आर द केमिकल टेस्ट ऑफ अल्कोलाइड, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट, ओके। सो यू कैन आइडेंटिफाई द अल्कोलाइड्स बाय डिफरेंट रिएजेंट्स, so that is the most important. So what are the different reagents? So there are Mayer's reagent, there are Dragonov reagent, there are Wagner, there are tannic acid, Hacker's ammonium granulate test. So we'll discuss one by one. So what is Mayer's reagent? Mayer's reagent is nothing but the potassium mercuric iodide solution, okay. So when alkaloid will be treated with Mayer's reagent, they will show you white or pale yellow cream colored precipitate. So Mayer's reagent you have to remember, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है और आपको नाम क्या है रिएजेंट का और उसका रिएजेंट क्या है। अभी मेयर्स रिएजेंट जो है, मेयर्स रिएजेंट में क्या होता है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन, मेयर्स रिएजेंट पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन, ओके। उसमें क्या होगा, अल्कोलाइड क्या करेगा, व्हाइट और पेल येलो व्हाइट और पेल येलो और क्रीम कलर्ड प्रेसिपिटेट दिखाएगा। ऑल अल्कोलाइड्स विल गिव यू मेयर्स टेस्ट पॉजिटिव एक्सेप्ट purine type of alkaloid, because they are not a true alkaloid, they are a pseudo alkaloids, okay, they are not biosynthesis from alkaloids. So जैसे कैफीन है, कैफीन आपका मेयर टेस्ट नहीं दिखाएगा, उसके लिए अलग से टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं म्यूरोक्साइड टेस्ट। सो मेयर्स reagent is nothing but the potassium mercuric iodide, ड्रैगन ड्रॉप reagent is nothing but the potassium bismuth iodide, potassium bismuth iodide, okay, ये मेयर्स मीन potassium mercuric iodide, M for mercury, you can remember like this, M for mercury, dragon drop means potassium bismuth iodide,
it will give you orange color precipitate with alkaloids. ये important है, ये GPAT last year GPAT 20 में पूछा था, drag and drop reagent. पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड इज एन ऑप्शन दिया था आपको, मेयर्स रिएजेंट, वैगनर्स रिएजेंट, ड्रैग एंड ड्रॉप, हैगर्स, तो उसमें आंसर था ड्रैग एंड ड्रॉप. सो व्हेन अल्कोलाइड्स विल बी ट्रीटेड विद ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट दे विल गिव यू ऑरेंज कलर प्रेसिपिटेट. अगेन वैगनर्स रिएजेंट इज बट द iodine solution, so they will give you brown or reddish brown precipitate. So what is tannic acid? Tannic acid, 5% tannic acid is used. Okay, so tannic acid will precipitate alkaloids. So the precipitate will be soluble in the dilute acid or dilute ammonia solution. Okay, so Meyer's reagent, drag and drop, Wagner's, tannic. Then Hager's reagent. So Hager's reagent consists of a saturated solution of picric acid, and it was also asked in the Niper. So Hager's reagent will give you yellow color precipitate, right? So ये जो है different taste, they are very important. Different taste of alkaloid, they are very important. So you have to remember these tests. So what are the identification tests for alkaloid? So we have seen one by one. Meyer reagent, drag and drop reagent, then your Wagner's reagent, then tannic acid, then Hager's reagent. Okay, so you have to remember this. इसमें दो टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं आपको. एक तो मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में क्या करेंगे, वो कॉलम में आपको देंगे रिएजेंट का नाम, एक कॉलम में देंगे उसका कंटेंट और बोलेंगे मैच द फॉलोइंग. मतलब एक कॉलम में देंगे मेयर्स रिएजेंट, एक कॉलम में देंगे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट, वैगनर्स रिएजेंट, टैनिक एसिड, हैगर्स रिएजेंट, और दूसरे कॉलम में क्या देंगे पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, पिक्रिक एसिड, लाइक दैट. ओके, तो आपको मैच द फॉलोइंग बोलेंगे, या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. सो अल्कोलाइड्स व्हेन ट्रीटेड विद मेयर्स रिएजेंट दे विल गिव यू व्हाइट पेल, ये ऐसा. या फिर आपको डायरेक्टली पूछेंगे व्हाट इज द मेयर्स रिएजेंट. ड्रैग एंड ड्रॉप का भी वैसे पूछेंगे, पिक्रिक एसिड का भी वैसे पूछेंगे, हैगर्स रिएजेंट क्या है वैसे पूछेंगे, वैगनर्स क्या है. तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मेरे बुक में भी है और नोट्स में भी है. सो यू हैव टू डू दिस चार्ट बाय हार्ट. अमोनिया रेनिकेट टेस्ट. ओके, सो इन दिस टेस्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया रेनिकेट इज यूज्ड. सो इट विल गिव यू पिंक fluorescent precipitate with the most of the alkaloids. Physical properties of alkaloids. So what is the physical properties of alkaloids? So most of the alkaloids, they are crystalline solid in nature. So there are few alkaloids which will occurs as the amorphous also. So most of the alkaloids are the solid in nature, solid crystalline. So there are few amino acids which is a amorphous in nature. For example, imidine. Imidine is alkaloid which is a amorphous in nature. This was question in GPAT 2020. Liquid volatile alkaloid, which is a liquid volatile alkaloid. That is nothing but the nicotine. आप जो टोबैको में जो अल्कोलाइड होता है, जो सिगरेट, दैट इज अ वोलेटाइल अल्कोलाइड. देन अगेन नॉन वोलेटाइल अल्कोलाइड पिलोकार्पिन एंड हायोसिन इज अ नॉन वोलेटाइल. तो इसके ऊपर एक बार जीपैट 20 में क्वेश्चन आ चुका है. तो निकोटीन इज अ वोलेटाइल alkaloid. It is not a solid, it's a liquid volatile alkaloid. Now non-volatile alkaloids, pilocarpine and iosine, these are non-volatile. Now what is the color of alkaloid? So majority of most of the alkaloids are colorless in nature, but some alkaloids are colored in nature. So what are those? क्योंकि ये आपको कलरलेस है, मोस्ट ऑफ द अल्कोलाइड्स कलरलेस होता है, तो इसके बारे में नहीं पूछेंगे. वो किसके बारे में पूछेंगे, जो कलर अल्कोलाइड है उसके बारे में पूछेंगे. मोस्ट ऑफ द अल्कोलाइड सॉलिड क्रिस्टलाइन होते हैं, तो उसके बारे में नहीं पूछेंगे. वो क्या पूछेंगे, कौन से लिक्विड है. तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जीपैट नाइपर में. सो कलर, मेजॉरिटी ऑफ अल्कोलाइड्स आर कलरलेस इन नेचर, सम अल्कोलाइड्स आर colored in nature. So what are they? Colchicine and berberine, they are yellow in nature. Remember, colchicine and berberine, they are yellow in nature. Canidine is orange. Salt of Sanagorin is a copper red. You have to remember the color alkaloids. You have to remember the liquid alkaloids also. Now next one, what is the solubility of alkaloid? So most of the alkaloids, they are the alkaloidal bases. So they are the alkaloidal bases, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है, बेसिक होती है वो. और ये भी क्वेश्चन एक बार आया था. So nature of alkaloids, they are basic in nature. Both alkaloidal bases, they are both alkaloid bases and their salt are soluble in alcohol. Generally, the bases are soluble in organic solvent, not in water. Alkaloids are not soluble in water; they are soluble in organic solvent and alcohol. Organic solvent कौन से, जैसे आपका अल्कोहल हो गया, या फिर आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, या फिर आपका बेंजीन हो गया, या फिर आपका ईथर हो गया. तो सोल्यूबल किस में होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, वाटर में नहीं. एक्सेप्शंस. So there are certain exceptions also. There are some water soluble alkaloids also. For example, caffeine, ephedrine, codeine, then again colchicine, pilocarpine, quaternary amine bases. So caffeine, जैसे आप चाय बनाते हो या फिर कॉफी बनाते हो, तो उसमें कैफीन सोल्यूबल है, इसलिए तो उसमें आता है. इसलिए तो आप, जैसे आपका हेडेक हो गया, आप एक कप चाय पीते हो तो आपका हेडेक चला जाता है. क्यों? क्योंकि कैफीन जो है वो पानी में उतरता है. ठीक है, मतलब इट इज अ वाटर सोल्यूबल. ओके, देन बेसिस, इनसोल्यूबल. और जैसे ये दो लाइन बोला है कि मोस्ट ऑफ द अल्कोलाइड बेसिस आर सोल्यूबल इन द अल्कोहल. जनरली बेसिस आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉट इन
वाटर, तो उसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन है? वाटर सोल्यूबल के लिए एक्सप्रेशन ये है कि कैफीन इज वाटर सोल्यूबल, इफेड्रिन इज वाटर सोल्यूबल, ओके, पिलोकार्पिन लाइक insoluble or sparingly soluble in certain organic solvent. तो morphine insoluble in ether, theobromine, theophylline is insoluble in the benzene. तो मोस्टली क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन होते हैं, हर जगह पे एक्सेप्शन होते हैं. ये एक्सेप्शन, सॉल्ट्स आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन. सो इनसोल्यूबल और स्पेरिंगली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. एक्सेप्शन क्या है कि सॉल्ट आर इनसोल्यूबल इन वाटर. क्विनिन मोनो इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर. अल्कलॉइड के सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और जो फ्री बेस होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन उसके लिए एक्सेप्शन है. तो सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर मोस्टली बट नॉट इन मोनोसल्फेट. सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स में शो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिव. तो उसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर एक्टिव होगा, कोई एक्टिव नहीं होगा. लाइक येलिफेट्रिन इज 3.5 more times than D-ephedrine. L-argotamine is 3-4 times more active than D-argotamine. D-tuberculin is more active than L-tuberculin. क्यूनिन का जो L फॉर्म होता है वो इट इज एंटी मलेरियल, D फॉर्म जो होता है वो एंटी मलेरियल नहीं होता, वो एंटी एरिथमिक होता है. जैसे रेसमिक मिक्सचर भी कभी कभी एक्टिव होता है, जैसे एट्रोपिन का है. एट्रोपिन इज अ रेसमिक मिक्सचर ऑफ DL हायोसाइनिन. So it was again question in the atropine is a racemic mixture of L-hyoscyamin. Atropine is a racemic mixture of L-hyoscyamin. Niper में भी आते हैं. Now chemical properties of alkaloids. Alkaloids either they are the nitrogen present in the alkaloid. It may be either in the form of primary amine, secondary amine or tertiary amine. जो नाइट्रोजन होता है अल्कोलाइड्स में वो तीन तरह के इसमें होता है. प्राइमरी अमाइंस में होगा, सेकेंडरी अमाइंस एज वेल सेकेंडरी अमाइन होगा, या फिर टर्शियरी अमाइन होगा, या फिर क्वाटरनरी होगा. जो अमाइन जो नाइट्रोजन होता है आपके अल्कोलाइड्स में, इट मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइदर प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, क्वाटरनरी अमाइन. तो प्राइमरी अमाइन किसमें होता है? नॉन एपिडेमिक. सेकेंडरी अमाइन इन द एपिडेमिक. टर्शियरी एट्रोपिन में होता है, क्वाटरनरी ट्यूबरक्युलिन में होता है. तो बेसिसिटी क्या है कि जो सेकेंडरी अमाइन होता है वो मोर बेसिक होता है देन प्राइमरी अमाइन देन टर्शियरी अमाइन. तो सेकेंडरी अमाइन आर द मोस्ट बेसिक, ओके, प्राइमरी उससे कम, टर्शियरी उससे कम. Again, saturated heterocyclic ring of amines are more basic. Okay. Then there is one more electron withdrawing group. Close proximity to the nitrogen will increase the basicity of alkaloid. अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है नाइट्रोजन के आसपास अल्कोलॉइड, तो वो उसका बेसिसिटी बढ़ाएगा. जैसे आपका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो है, आपके एग्जांपल कौन से, जैसे हैलाइड्स. एक्सट्रैक्शन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट रिमेंबर द नेम्स. स्ट्रास-ओटो प्रोसेस, मंस्की प्रोसेस, किपनबर्गर प्रोसेस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जीपीएट के लिए. ये नाउ विंका अल्कोलाइड्स. वी विल टेक 2 अल्कोलाइड्स एंड देन वी विल एंड द सेशन. सो विंका अल्कोलाइड्स, सो इट इज नोन एज अ कैथरांथस. विंका अल्कोलाइड्स इट इज नोन एज कैथरांथस और पेरिविंकल. ओके, सो व्हाट इज बायोलॉजिकल सोर्स? बायोलॉजिकल सोर्स इज नथिंग बट द होल प्लांट ऑफ कैथरांथस रोजेस फैमिली अपोसाइनेसी. विंका क्या होता है? विंका में क्या आता है? होल प्लांट ऑफ कैथरांथस रोजेस फैमिली अपोसाइनेसी. इट इज फाउंड इन ऑल दिस. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कल्टीवेशन कलेक्शन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक कनेक्ट. सो विंका में क्या होगा? यूनिसेलुलर कवरिंग ट्रैकोम, क्रूसिफेरस टोमेटा, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल. ये क्रूसिफेरस टोमेटा क्या होता है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला है. वी हैव डिस्कस ऑल द टाइप ऑफ स्टोमेटा. व्हाट इज पैरासाइटिक, व्हाट इज क्रूसिफेरस, व्हाट इज अनोसाइटिक, व्हाट इज अम्नोसाइटिक, व्हाट इज sunken type of stomata. We some discuss. So what are the chemical constituent in the vinca? There are 20 dimeric indole alkaloid. Dimeric means there will be exactly similar two structures. Okay, so dimeric indole alkaloids or dihydroindole alkaloids. So vincristine and vinblastine is very important out of these 20 amount. So vincristine and vinblastine, so they are anti-cancer alkaloids and they are found in the vinca. So vinblastine is a indole. Okay, so in case of vinblastine, so indole part is known as catharantin and dihydroindole part is known as vindoline. ये GPAT में पूछा था. So indole part of vinblastine is known as a catharantin and dihydroindole part of, so other alkaloids present in the vinca, they are asmalin, pentene, tetrahydroaldostine. Almost 500 kilogram of this vinca plant. अगर आपने विंका का प्लांट्स लिए 500 किलो लिया तो उसमें से सिर्फ आपको 1 ग्राम विनक्रिस्टिन मिलेगा, क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत ही लो होते हैं. एक्सट्रीम लो कंटेंट 0.0002%. ओके, अल्कोलॉइड्स इसमें बहुत ही कम होता है, एंटी कैंसर है ठीक है, लेकिन उसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है 0.0002%. तो दैट्स वाई 500 किलोग्राम अगर आप विंका का लीव्स लेंगे या फिर विंका का प्लांट लेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा? 1 ग्राम ऑफ विनक्रिस्टिन. विनक्रिस्टिन इज एंटी कैंसर. ओके, सो व्हाट इज यूज? विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, दे आर
anti-neoplastic agent, they are anti-cancer agent. They act by arresting the mitosis at the metaphase. क्या होता है जब अपन एंटी कैंसर ड्रग पढ़ेंगे तो उसमें बोलूंगा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये माइटोसिस क्या होता है, न्यूरोसिस क्या होता है। यहाँ पे इतना याद रखो कि दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, हॉडकिंस डिसीज, रेटिकुलर सेल कार्सिनोमा, तो sarcoma, lymphosarcoma, then myosarcoma. तो myosarcoma क्या है? It is a myome is muscle. It is a cancer of muscle. Lymphosarcoma is a cancer of lymphatic system. रेटिकुलर सेल जो होते हैं उसका कैंसर होगा तो उसको बोले रेटिकुलम सेल कार्सिनोमा. ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर. हॉडकिंस डिसीज एक कैंसर का टाइप. तो यहाँ पे इतना याद रखो कि पिंका का बायोलॉजिकल सोर्स, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और उसका माइक्रोस्कोपी, यही इंपॉर्टेंट है जीपैट के लिए. पिंका का ये प्लांट होता है और ये पिंका का ये प्लांट होता है, उसका बिन क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है. सी मैंने बोला था दे हैव डायमेरिक इंडोल अल्कोलाइड्स. डायमेरिक मींस व्हाट? अगर यहाँ से आप एक ड्रॉ लाइन करोगे तो एग्जैक्टली ये जो स्ट्रक्चर है, हाफ ऑफ स्ट्रक्चर विल बी सेम विद द अनदर हाफ स्ट्रक्चर. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डायमेरिक अल्कोलाइड. डायमेरिक मतलब दो स्ट्रक्चर होंगे एग्जैक्टली सिमिलर. तो ये एक हाफ स्ट्रक्चर, हाफ स्ट्रक्चर जो है ये सिमिलरली उसका होगा. और ये देखो इंडोल रिंग है यहाँ पे, दैट्स व्हाई दे आर इंडोल अल्कोलाइड्स. ये विन क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, इट इज आल्सो डायमेरिक. नाउ आइसोक्लिनिन टाइप ऑफ अल्कोलाइड, दे आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन अमोन. सो एग्जांपल इज ओपियम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर. तो व्हाट इज ओपियम? ओपियम इज नथिंग बट द what are the synonyms? It is known as a raw opium, afim, gum opium. So opium is also known as a raw opium, afim or gum opium. So what is biological source of opium? It is obtained from dried latex from unripe capsule of Papaverum somniferum family Papaveracea. Papaverum somniferum नाम का एक प्लांट होता है, उसका एक कैप्सूल होता है. वो कैप्सूल में से लैटेक्स जो मिलता है उससे. सो ड्राइड लैटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम अनराइप कैप्सूल ऑफ. अनराइप मतलब क्या? बिना पके हुए, कच्चा. राइप मतलब पका हुआ. तो अनराइप कैप्सूल ऑफ पापावेरम somniferum family Papaveracea, it should contain not less than 9.5% of morphine, calculated as nitrous morphine. ये important. 9. Not less than 9.5. Then again not less than 2% of codeine. So इसका cultivation collection भी important है. And all the aspect of cultivation collection is governed by the government, state government or central government. As opium is a narcotic plant, it is a habit forming plant. ये opium का है, narcotic है, तो under that's why the cultivation collection aspect जो भी है, अगर आपको ऐसा नहीं कि कोई भी आके मुंह उठा के आप ओपियम का खेती कर सकते हो, ऐसा नहीं. उसके लिए आपको प्रॉपर परमिशन लेना पड़ेगा. बहुत सारा फॉर्मेलिटीज होता है. गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा. नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट जो उसके अंडर जो भी क्लॉजेस है, जो भी नॉर्म्स है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप जाके ओपीएम का खेती कर सकते. और मतलब उसमें कैसा रहता है, खेती में पूरा आपका गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहता है. उसमें पूरा खेत का आइसोलेशन होगा. मतलब जो भी आपका जितना भी फील्ड है, मतलब 1 एकड़ या 2 एकड़ या 3 एकड़, तो एकड़ में पूरा कंपाउंड होगा. उसको प्रॉपर सिक्योरिटी रहेगा. उसमें वहां पे आपको पुलिस के 2 हवलदार विद आर्म्स वो आपको डिप्लॉय करे जाएंगे, तभी आप ये सब कर सकते हो. ऐसा नहीं कि कोई भी आके ओपीएम का खेती करेगा. अगर आप पकड़े गए फिर आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट है. जैसे गांजा पकड़ते हैं, गांजा पकड़ते ना, जो चोरी गाँव में खेत में 1 हाथ 2 झाड़ लगाते, उसका 1 हाथ 2 प्लांट लगाते उनके सेल्फ कन्वीनियंट लिए. लेकिन वो अगर पकड़े गए तो फिर उसको जेल हो जाती. 10 ईयर्स तक आपको इम्प्रिजमेंट हो सकता है और मे बी अप टू फाइन अप टू 2 lakhs. ये भी एक बार ये जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है, लेकिन ये पूछा था ये जब भी अपन जूरिस्प्रूडेंस लेंगे तब वाले बोलूंगा. तो यहाँ पे कल्टीवेशन कलेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर ओपीएम. सो कल्टीवेशन कलेक्शन दे आर गवर्नड बाय गवर्नमेंट टू अंडर एनडीपीसी. Now opium poppy is grown in the November to March. Propagation is done by seeds. As the seeds of this opium is very small, they are mixed with the sand and then they are cultivated. Okay, so this opium requires high fertile soil. After sowing within the 3-4 months, plant bears a flowers which will be converted into capsule, and within few days this capsule will attain a maturity. अगर ये कैप्सूल मैच्योर हुआ या नहीं हुआ कैसे पता करेंगे? कैप्सूल विल टर्न इनटू ग्रीन लाइट टू डार्क ग्रीन टू लाइट ग्रीन. मतलब उसका कलर चेंज होगा. जो डार्क ग्रीन है वो कलर आपका लाइट ग्रीन होगा. लाइट ग्रीन जैसे ही बनता है तो मतलब कैप्सूल मैच्योर हो चुका है, उसमें आप लैटेक्स निकाल सकते हो. सो नाउ हाउ यू हैव टू isolate the latex of opium. So there is one instrument known as a nuster. Nuster is an instrument that is a needle used to make a incision. कट करने के लिए, ओपियम पॉपी को कट करने के लिए नस्टर यूज करते हैं.
और ओपियम पॉपी को कट कब करते हैं? आफ्टरनून में करते हैं, दोपहर में। तो कट करने के बाद उसमें से लैटेक्स बाहर आएगा एंड दैट लैटेक्स इज कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। ये लैटेक्स जो आएगा वो नेक्स्ट मॉर्निंग में कलेक्ट करना है आपको। क्यों? जब लैटेक्स आता है तो वो लिक्विड होता है, उसको सॉलिडिफाई होने के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग में क्यों करना है? मॉर्निंग में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग में कलेक्ट करना है using a instrument known as a charpal. Now, incision procedure is repeated 4 times on the same capsule within different site in 2 days interval. 2 दिन में आपको 4 बार उसको कट देना है। किसको? कैप्सूल को। ये कैप्सूल क्या होता है मैं बोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये ओपीएम का प्लांट्स होता है। ओपीएम का प्लांट्स होता है। मैक्सिमम इसका जो प्रोडक्शन होता है, इसका जो खेती होता है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान की साइड पे होता है। दैट्स वाई आपने सुना होगा न्यूज पे कि ये तस्कर पकड़े गए, ये ड्रग्स डीलर पकड़े गए, ये सब जितना भी मॉर्फिन है, कोडीन है, ये सब वहां से आता है। ये जो होता है ये पॉपी होता है, ओपियम पॉपी। ठीक है, ओपियम पॉपी होता है। ये देखो यहाँ पे दिखा है और इसको कट किया जाता है। इसमें एक इंसिज मतलब कट दिया जाता है, कट करना है इसको। उसके बाद इसमें से व्हाइट लैटेक्स बाहर आता है, तो वो आफ्टरनून में दिया जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग में ये लैटेक्स ग्रे कलर का या फिर ब्राउन कलर का। तो ऐसा एक ही कैप्सूल पे बाकी सभी साइड में आपको कट करना है 4 बार। तो सब मतलब उसको निचड़ उसमें के जितना भी रस है वो सब निकालना है, तो वो निकलना है। एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज अ चारपला। इट इज यूज्ड फॉर द स्क्रैपिंग ऑफ दिस लैटेक्स। यहाँ से लेना है आपको, उसको बोलते हैं चारपल। नाउ व्हाट इज द केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट इन द मॉर्फिन? So your opium alkaloids consist of a 3 kind of alkaloids. So you will have 3 kind of alkaloids in the opium. So what are those? Those are nothing but the phenanthrin alkaloids, benzyl isoquinoline alkaloids, cryptopine alkaloids. So phenanthrin alkaloids, benzyl isoquinoline alkaloids, and cryptopine alkaloids. So in case of phenanthrin, morphine, codeine, thibin is there. In case of benzyl isoquinoline, narcotin, that is also known as narcin, then papaverine, then cryptopine, protopine, and so there are 3 classes of alkaloids found in the opium. You have to remember it. Phenanthrin मतलब इसमें 3 रिंग्स होंगे। फिना मीन्स फिनाइल, थ्रीन मतलब फिनांथ्रिन मतलब 3 फिनाइल रिंग होंगे। सो मॉर्फिन, कोडीन, थीबिन दे आर अ फिनांथ्रिन। एक बार जीपैट में पूछा था, नाइपर में भी पूछा। अगेन बेंजिल आइसोक्विनोलिन, उसमें कौन से? नार्कोटिन, पापावेरिन, नार्सिन। सो पापावेरिन इज अ बेंजिल आइसोक्विनोलिन अल्कोहॉल, ये भी एक बार पूछा। अगेन तीसरा क्लास कौन सा आता है? क्रिप्टोपिन। क्रिप्टोपिन में ये 2 होते हैं, क्रिप्टोपिन एंड प्रोटोपिन। ओके, सो अगेन यहाँ पे दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। ऑल ओपियम अल्कोहॉल्स आर प्रेजेंट, ऑल ओपियम अल्कोहॉल्स सॉरी, ऑल ओपियम अल्कोहॉल्स आर प्रेजेंट एज अ सॉल्ट ऑफ मेकोइक एसिड। जितने भी ओपियम के अल्कोहॉल है वो कैसे मिलते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द सॉल्ट ऑफ मेकोइक एसिड। ये जीपैट नाइपर। मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन इज अ मोनो एसिडिक बेस। मॉर्फिन इज अ मोनो एसिडिक बेस. It is a levorotatory, okay, and due to presence of phenolic hydroxyl group, it is soluble in alkali hydroxide. So morphine is soluble in alkali hydroxide, but not in all alkali hydroxide. So morphine is soluble in alkali hydroxide except ammonium hydroxide. This was also again a question in GPAT as well. So morphine is soluble in all alkali hydroxide. Alkali hydroxide क्या होता है? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हाइड्रोक्साइड्स के सॉल्यूशन में उसमें सोल्यूबल है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल नहीं है। It will have less solubility in water and other organic solvent. Okay, ये हो गया मॉर्फिन के बारे में। मॉर्फिन is a monoacidic base, levorotatory, soluble in the alkali hydroxide, not soluble in the ammonium hydroxide, less soluble in the water. And now codeine. Codeine क्या है? Codeine is a strong monoacidic base. Strong monoacidic base. Again, it is a levorotatory, soluble in the water and organic solvents. Okay. Then papaverine क्या है? Papaverine is a weak monoacidic base. ऑप्टिकली इनएक्टिव, रिमेंबर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मॉर्फिन, कोडीन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, लिवोरोटरी है, लेकिन पापावेरिन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दिस वाज अगेन क्वेश्चन इन सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट नॉट इन वाटर। तो इसमें मॉर्फिन, कोडीन जो है वो लिवोरोटरी है, मोनो एसिडिक बेस है। पापावेरिन क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो मॉर्फिन, कोडीन, थीबिन फिनांथ्रिन टाइप का अल्कलॉइड्स है। पापावेरिन बेंजिल आइसोक्विनोलिन टाइप का अल्कलॉइड। ये याद रखो, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं नाइपर के। देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मॉर्फिन? सो मॉर्फिन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। इट इज यूज्ड इन द टर्मिनली इल पेशेंट ऑफ कैंसर। मॉर्फिन एक बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही पोटेंट एनाल्जेसिक है। इट इज अ वेरी प्रॉमिसिंग एंड पोटेंट एनाल्जेसिक। इट इज अ सेंट्रल एनाल्जेसिक, ओपोइड एनाल्जेसिक। लेकिन ऐसा नहीं कि ये एनाल्जेसिक है, बहुत ही अच्छा एनाल्जेसिक है तो किस में भी यूज कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, सो इट इज अ नार्कोटिक ड्रग एंड इट इज कंट्रोल अंडर द NDPS एक्ट। मतलब आप अगर जाएंगे मेडिकल स्टोर में, मुझे मॉर्फिन का टैबलेट दे दो, कोई नहीं देगा आपको, हकल देगा, बात चल निकल भाग बोलेंगे यहाँ से जल्दी। तो ऐसा नहीं कि कोई भी आके मॉर्फिन का टैबलेट ले सकता है। मॉर्फिन का टैबलेट लेने के लिए आपको प्रॉपर एक
प्रिस्क्रिप्शन लगेगा, डुअल प्रिस्क्रिप्शन लगेगा। ऐसा नहीं कि आप अगर किसी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके आओगे आप और आप बोलेंगे नहीं ये मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है मॉर्फिन का टैबलेट दो, नहीं मिलेगा। तो वो प्रिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस हिस्ट्री भी चेक करते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री मतलब क्या, कि अगर आपको कैंसर है, टर्मिनली इल पेशेंट है आप, या आपको कैंसर की वजह से बहुत ही पेन होता है, तभी आपको मॉर्फिन देंगे। ऐसा किसी को भी मॉर्फिन नहीं देते। और ये मॉर्फिन का इंजेक्शन दो ही कारण यूज होता है, एक तो ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट, और दूसरा होता है जो आपके आर्मी के जवान्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जिनको अगर किसी को कोई गोली लग गई तो उनका पेन रिलीव करने के लिए मॉर्फिन दिया। इट इज यूज्ड इन टू कंडीशन ओनली, मॉर्फिन इज यूज्ड इन टू कंडीशन। इट इज यूज्ड एज अ एनाल्जेसिक फॉर terminally ill patients of cancer, and then it is also used in the your soldier, okay, that is also used for the soldier। ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज में कि अभी देयर इज वन मूवी नोन एज अ टैंगो चार्ली, हिंदी मूवी है टैंगो चार्ली नाम का, उसमें स्टारकास्ट है अजय देवगन, आपका बॉबी देओल, और ये आजकल के बच्चों को ये मूवीज नहीं पसंद आएंगी, लेकिन उसमें दिखाया गया है कि एक जो सोल्जर है उसको टेररिस्ट वगैरह बांध के चाकू मार देते हैं, उसको गोलियां मार देते हैं, उसको बहुत पेन होता है, वो बहुत रोता है, तो उसके मॉर्फिन का इंजेक्शन देना, तो मॉर्फिन उसमें यूज करते हैं। अगेन कोडिन जो है इसमें का, इट इज यूज्ड एज एंटी टचो टू रिलीव द कफ, देन पापावेरिन इज अ एंटी स्पाज्मोडिक, ये सब इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द केमिकल टेस्ट फॉर ओपियम? सो ड्यू टू मैकोइक एसिड विद फेरिक क्लोराइड इट विल गिव डीप पर्पल कलर। मॉर्फिन विल स्प्रिंक, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन ठीक है। मॉर्फिन विल स्प्रिंकल ऑन द नाइट्रिक एसिड विल गिव ऑरेंज कलर। This test is not given by codeine. Again morphine solution पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ क्या करेगा, आपको ब्लूइश ग्रीन कलर देगा, ये भी कोडिन नहीं देगा। डिफरेंस क्या है कोडिन और मॉर्फिन में? सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस, मिथॉक्सी ग्रुप का डिफरेंस। पापावेरिन सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोराइड, लेमन, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो इट इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। सो यहाँ पे देखो ये OH है, यहाँ पे OH है, इट इज नोन एज अ फेनोलिक OH, इट इज नोन एज अल्कोहलिक OH। तो ये कोडिन का है, कोडिन में क्या है, वन मिथॉक्सी ग्रुप है, यहाँ पे जो मिथॉक्सी ग्रुप है यहाँ पे नहीं है मॉर्फिन में, ये स्ट्रक्चर डिफरेंस है। मॉर्फिन कोडिन इज अ मिथॉक्सी मॉर्फिन, कोडिन इज अ मिथॉक्सी मॉर्फिन। देन अगेन there is one compound known as heroin, that is a synthetic compound heroin. So diacetyl morphine, monoacetyl morphine is known as codeine, diacetyl morphine is known as a heroin। तो बाकी के थिपेन, पापावेरिन इज अ बेंजील आइसोकेनोल। कमर्शियल वैरायटीज ऑफ ओपियम, ये एक बार पूछा था जीपैट में, इसलिए अपन ले लेते। सो देयर आर डिफरेंट कमर्शियल वैरायटीज ऑफ ओपियम, इंडियन ओपियम, पर्शियन ओपियम, तुर्किश ओपियम, देन चाइनीज ओपियम। सो व्हाट इज द इंडियन ओपियम, वो कैसे दिखता है? सो इट इंडियन ओपियम राउंड इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक्स और पीसेस, जो क्यूब होगा उसका 900 ग्राम का एक क्यूब होगा, उसको बोलते हैं इंडियन ओपियम। डार्क ब्राउन होगा, इसमें क्या होगा, इट कंटेन 10% अनहाइड्रस मॉर्फिन। इन पर्शियन ओपियम ब्रिक शेप्ड मास है, जैसे आपका ईट होता है, ईट के शेप का एक मास होता है, 400-450 ग्राम का होता है, हाइड्रोस्कोपिक होता है, ग्रैनुलर डार्क ब्राउन कलर, ये होता है पर्शियन ओपियम। तुर्किश ओपियम कैसा होता है, इस कॉमनली नोन एज ड्रगिस्ट ओपियम और सॉफ्ट ओपियम। ये क्वेश्चन आया था एक बार जीपैट में। सो विच वैरायटी ऑफ ओपियम इज नोन एज ड्रगिस्ट ओपियम और soft opium? So it is a Turkish opium. Turkish opium is known as a druggist opium or soft opium. So conical, rounded and flattened masses, dark brown in color. Chinese opium कैसा होता है, flat globular things containing 4 to 1% of morphine, 4 to 11. So it is all about the morphine. So I think almost we have time. एक 12 बजे तक लेते हैं। एक बार एक काम करता हूँ मैं, एक प्रोजेक्ट से ऊपर लेता हूँ रिकॉर्डिंग बहुत